morning and assalamu alaikum everyone. Today we will present the remaining part of our CEP, which includes the explanation of our projects, entities, relationships, Crowdfoot, ERDs, double ERD and their translation into the relational schema. In this presentation, we have also covered the users, their privileges, and their views. Additionally, we will share the specific code snippets starting with an HTML form that receives user input and posts them. Next, the PHP code that processes these posted variables. Following that, the database handling code that uses PHP and MySQL, including TCL to manage financial transactions. Finally, we will demonstrate a PHP or HTML script that displays database tables for stakeholders. This presentation provides a comprehensive overview of the technical aspects of our project. First of all, I will show you the code and explain what is happening in each part. Okay, so now you can see the code of HTML form for receiving inputs. Basically, the HTML form is the user interface where users can input their data, such as full name, email, password, phone number, and their role. It uses the post method to securely send the inputted data to a server-side script that is register.php for processing. This form includes input field for text, email, password, and a drop-down menu for role selection. Upon clicking the register button, the data is sent to the backend for further handling. Now moving to the next part, which is PHP code to receive posted variables. The PHP script that is register.php captures the data sent from the HTML form using the post super global. Each form field corresponds to a specific variable in PHP, such as full name, email, password, phone number, and role. The password is hashed using a secure algorithm that is password_hash to ensure data security before it is stored in the database. This process lays the groundwork for securely managing user information. In the next part, we have database handling with MySQL, including TCL. So, the PHP script connects to the database and uses a prepared SQL statement to insert the user data into the user table. The transaction control logic TCL ensures that the process is secure and consistent. The script begins a transaction, performs the data insertion, and commits the changes if successful. If any error occurs during the process, the transaction is rolled back to maintain data integrity. This ensures that no partial or invalid data is saved in the database. In the final part, we have PHP code to display the database tables. A separate PHP script retrieves data from the users table and displays it in an HTML table format for stakeholders. This script connects to the database, executes a select query to fetch all relevant user information, and dynamically generates an HTML table with the results. Stakeholders can easily view user details such as their user ID, their full name, their email, their password, their role, and the date the user was created. Next, my other group member will continue the remaining part of our CEP. Thank you. जैसा कि हमारी ERD में सबसे पहली एंटिटी जो है वो यूज़र एंटिटी है। यूज़र एंटिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, एक यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। और ये बेसिकली हमें इसलिए काम आता है कि इवेंट ऑर्गेनाइज जो यूज़र होगा वो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज भी करवा सकते हैं, वो कोई भी मल्टीपल टिकट्स परचेज़ कर सकता है। उसके अलावा वो हमें फीडबैक दे सकता है और उसको नोटिफिकेशन आएंगी और वो उसकी अपनी विश लिस्ट होगी कि वो क्या चाहता है कि उसके इवेंट के अंदर किस तरह की चीज़ें हों या क्या क्या हों। और ये 1 to many का रिलेशनशिप है। उसके बाद हमारी इवेंट्स की एंटिटी आ जाती है। इवेंट्स के अंदर हम लोगों का इवेंट का नाम आ जाता है, इवेंट का डेटा, लोकेशन, डेट वगैरह आ जाती है। काफ़ी सारे इवेंट्स एक जो यूज़र होगा वो ऑर्गेनाइज करवा सकता है, लेकिन एक इवेंट जो है तो एक ही यूज़र का होता है। इवेंट एंटिटी के मैनी रिलेशनशिप्स है टिकट्स के साथ, क्योंकि एक इवेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टिकट्स हो सकते हैं। और इसका वन रिलेशनशिप है इवेंट की कैटेगरी क्या है और इसके अलावा यूज़र कितने हैं इसके, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि एक इवेंट एक ही यूज़र जो है करवा सकता है या ऑर्गेनाइज भी एक ही यूज़र कर सकता है। इसके बाद इवेंट कैटेगरी की एंटिटी आ जाती है, और इवेंट एंटिटी की जो कैटेगरी है या इवेंट कैटेगरी की जो एंटिटी है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो एक आईडी होगी, इवेंट आईडी, इवेंट का नाम हो गया, और इवेंट का इसके अलावा
टिकट आईडी हो गई, और इसका 1 to many रिलेशनशिप आ जाता है इवेंट के साथ, क्योंकि काफ़ी तरह के ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिनकी कैटेगरी एक ही हो। और इसके बाद हमारी आ जाती है जी पेमेंट एंटिटी। और पेमेंट एंटिटी जो है तो किसी भी इंडिविजुअल की पेमेंट्स रखता है। इसका 1 to 1 रिलेशनशिप आ जाता है टिकट्स के साथ, के टिकट की जो प्राइस होगी या जो भी उस टिकट के ऊपर प्राइस टैग वगैरह होगा, या अगर वो कोई भी चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं अपने उसके अंदर इवेंट के अंदर स्पेसिफिक के अंदर, तो वो हम ऐड कर देंगे और उसकी 1 to 1 रिलेशनशिप होगी। और मैनी टू वन पेमेंट की रिलेशनशिप है हमारा यूज़र्स के साथ और इवेंट्स के साथ। और इसके बाद हमारी फाइनल एंटिटी आ जाती है नोटिफिकेशन की एंटिटी। नोटिफिकेशन की एंटिटी जैसे कि हमें पता है कि डिटेल्स कैरी करती है, मैसेज की डिटेल हो गई या डेट हो गई कि आपकी ड्यू डेट ये, उससे एक दिन पहले का हम अगर टाइमर सेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी, या हमें उसके अलावा इवेंट्स जो होंगे उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, यूज़र्स को जो है इसके साथ साथ नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसका जो रिलेशनशिप होगा मैनी टू वन होगा इवेंट्स के साथ और यूज़र्स के साथ। यूज़र्स उनके प्रिविलेजेस और उनके व्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए जो है हम पहले ये जानेंगे कि हमारे पास यूज़र्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास यूज़र्स हैं, एडमिन है, ऑर्गेनाइज़र है और रेगुलर यूज़र्स हैं। एडमिन जो है पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, उनमें यूज़र्स भी आते हैं, इवेंट्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, ऑडिट लॉग, सिस्टम वाइड नोटिफिकेशंस वगैरह। और ऑर्गेनाइज़र जो है उन इवेंट्स पे फोकस करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उनकी क्रिएशन को हैंडल करते हैं, उनको एडिट करते हैं, उनमें से डिलीशन और इंसर्शन करते हैं, टिकट्स की डिटेल्स हैंडल करते हैं, फीडबैक और इवेंट स्पेसिफिक जो ऑडिट लॉग्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं ऑर्गेनाइजर्स। रेगुलर यूज़र्स जो है सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, वो वहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, वहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं अपना, और नोटिफिकेशंस रिसीव करते हैं वो। और हर एक जो है रोल जो है वो उनको स्पेसिफिक प्रिविलेजेस असाइन की गई हैं। जैसे कि एडमिन जो है सिस्टम के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, वो यूज़र की डिटेल शो कर सकते हैं और इवेंट के स्टेटसेस और लॉग्स और फीडबैक्स देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र जो है इस डेटा को व्यू कर सकते हैं, वो इवेंट्स के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब जो है एक्सेस कर सकते हैं, और उनमें जो है अटेंडी डिटेल्स भी ये एक्सेस कर सकते हैं। टिकट, सेल और नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन इनके पास पड़ी होती है। जबकि रेगुलर यूज़र्स के साथ जो है अपना पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है, उनके व्यूज़ होते हैं, जो सामान उन्होंने ख़रीदा हुआ है और इवेंट्स जो उन्होंने अपने लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उन नोटिफिकेशन भेजी थी ऑर्गेनाइज़र्स को और एडमिन्स को, तो उनके पास वही पर्सनल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। और इस रोल बेस्ड स्ट्रक्चर की मदद से हम एफिशिएंटली अपने सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं, और एफिशिएंट सिस्टम जो है फंक्शनैलिटी देगा हमें, और सारे टास्क जो है डिवाइड हो जाते हैं और एक बंदे पे सारे टास्क नहीं आते, जिसकी वजह से टाइम कंजम्पशन भी कम हो जाती है। और जितने एक्सेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारे जो है इन 3 यूज़र्स में डिवाइड हो रखे हैं इक्वली।